So come on guys, get ready. You don't know what you are gonna speak about, but you might be thinking नहीं सर हमने पर्ची में लिखा हुआ है, जरा पर्ची दिखाओ अपनी। ओके गाइस, तो मैंने सभी लोगों को एक एक पर्ची पर कुछ लिखने के लिए टॉपिक दिया, जो भी उन्हें आसान लगता है, जिस भी टॉपिक पर वो आसानी से बोल सकते हैं, वो टॉपिक उन्होंने इस पर्ची में लिख लिया है। सभी लोगों ने अपने अपना लिख लिया बच्चों, सभी ने? गुड। लेकिन इसमें सरप्राइज क्या है? हाँ, सरप्राइज वाली बात इसमें ये है, इसमें टेंशन वाली बात ये है कि जो टॉपिक आपने लिखा है अपने लिए कि मुझे इस टॉपिक पर बोलना है, हो सकता है वो आपको ना मिले। तो इसके लिए हम एक गेम देखिए अभी खेलेंगे। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है। चलिए, तो विशाल सारी पर्चियाँ इस डब्बे में इकट्ठा करके लाओ, चंदा इकट्ठा करके लाओ। कम ऑन, ओके, कम ऑन। सभी अपनी चिट इस डब्बे में डाल दें, जिस चिट में आपने टॉपिक का नाम लिखा है, और फोल्ड करो उसे अच्छे से। नहीं नहीं, नो नीडेड, नाम नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक लिखना है आपको। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टॉपिक अपॉन विच यू कैन स्पीक विदाउट एनी प्रॉब्लम। कम ऑन, डू इट फास्ट। दिल की धड़कनें बढ़ तो नहीं रही? आपको सर में दर्द हो रहा है कि धोखा? वेरी नाइस। उसने अपने टॉपिक का नाम लिखा है रौनक सिंह। वेरी गुड। हाँ, ही वांटेड टू स्पीक हिज सेल्फ इंट्रोडक्शन, आई थिंक। ये अपना सेल्फ इंट्रो बोलना चाहते थे, इसीलिए अपना नाम लिख दिया। बहुत अच्छे। और इन्होंने पर्ची भी अजीब तरह से मोड़ी है, देखो कौन है ये प्राणी, जरा देखो। ओके, सो गाइज, डब्बा बंद कर दीजिए। कम ऑन, ओके, शफल करिए अच्छे से, इसे हिलाइए, शेक करिए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो गेम शुरू होने वाला है अब। तो बच्चों, ये रहा बॉक्स। इस बॉक्स में सभी लोगों ने अपनी अपनी पर्ची डाल दी है। अब हम बागेश्वर धाम जाएंगे। कोई बात नहीं, निकाल के मैं ही दूंगा। ओके, कोई इंटेलिजेंट इंसान ने 0 लिख दिया उस पर। वेरी नाइस। तो आपकी पर्ची खुलने वाली है गाइज। सो कम ऑन, गेट रेडी, पर्ची खुलने वाली है। तैयार हैं आप लोग? और डिसाइड मैं करूंगा। आई विल डिसाइड दैट हु इज गोना स्पीक एंड हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन एंड द नेक्स्ट पर्सन। देखो खांसी आ रही है अंजलि को। गुड। चलो, तो ये माइक आपको होल्ड करना है, जिसका भी नंबर आएगा उसे मैं ये माइक दे दूंगा। उसके बाद दे हैव टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ दिस माइक, और जबरदस्त तरीके से आपको बोलना है। शुरुआत होगी आपकी गुड मॉर्निंग से, या हाय या हेलो से, लेकिन बोलना है आपको एनर्जेटिकली। डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी हैव सो मेनी कॉन्फिडेंट स्पीकर्स एंड दे रियली फील लाइक स्पीकिंग। एम आई राइट? देखा, तो नेहा से शुरुआत करी जाएगी। यस, शी सेड यस यस, वेरी नाइस। सो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे नेहा का फिर से एक बार स्टेज पे। कम ऑन नेहा, कम ऑन द स्टेज। चलिए, सो बच्चों, ये हमने डब्बा खोला। ये आप माइक लीजिए। And now let's see what happens. 0 वाले बच्चे। अच्छा, आपकी थी वो? मेरी नहीं थी। तो मैंने ऐसे कोई पर्ची निकाली है और देखते हैं क्या टॉपिक है इसमें। मुझे पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट नो वेदर यू वुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ रौनक और नॉट। ओके, लिखा हुआ है वी शुड क्लोज ऑल मीट शॉप्स। Good morning to all of you. Good morning. So my topic is we should close the all meat shops. So
we should close any meat shops because many animals are like hen, like go, yeah, goat, sheep, and many animals we cut that bodies and eating also. On this topic, you need to elaborate so many things, right? You need to talk about humanity. अरे सर छुपाने से क्या होगा रौनक? चलिए कोई नहीं, फिर भी आई वुड लाइक टू कॉल शकीना. शकीना, कम ऑन द स्टेज. सही तो था, सही नाम लिया मैंने पहली बार. वेरी नाइस, गुड. सो लेट्स सी, क्लाइमेट चेंज. Very good topic. Did you write it? No, we cannot change. Why? We can see. Okay, she wrote that. दोस्त नहीं लिखा था, पड़ोस में बैठे हुए दोस्त ने. तो गाना गाओ, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा, अरे इंतजार नहीं, एतबार ना रहा. क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जो मौसम में आप देख रहे हो चेंज, पहले मई के महीने में एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि अप्रैल में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी. अब क्या हो रहा है? अप्रैल से एसी चल गए. कितना गर्म हो रहा है माहौल. इसके पीछे ये ग्लोबल वार्मिंग जैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता है. तो क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण पॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं? हाँ, व्हीकल्स हो सकते हैं. अरे आप तो मुझसे ज्यादा जानते. वेरी गुड, कम ऑन, क्लैपिंग करेंगे जोरदार. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. अरे जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए. गुड, जबरदस्त तरीके से. शकीना दिखा दो गदर, कम ऑन. Good morning, everyone. नहीं, फिर से गुड मॉर्निंग, तगड़े वाला. कम ऑन. Good morning, everyone. So today I am going to speak about climate change. So shall I start? Yes. You can see the weather of outside. There is an extreme hot summer especially in this summer, like 2024. We have faced a lot of hot weather, and we have seen in news that red alert is also implemented in Delhi. The Delhi temperature is above 40 degrees Celsius, so it is too extreme hot. And you know what? Why is this happening? You all are aware of it because the people have lot of vehicles, and you have seen the traffic jams on road. Good, very good. Due to deforestation, people not are aware of planting trees, and because of the hot weather we use in our home the AC, and because of AC releases the harmful gas chlorofluorocarbons, and it also depletes the ozone layer, and ozone layer helps us to protect from harmful UV rays. It can also cause you skin cancer, and many other diseases. There are so many diseases which can cause by harmful UV rays. Very nice. So most of the people apply sunscreen to protect themselves, but you can see it is not effective. So I hope you will understand my concern about this. So you should plant more trees, and you should take care about them, and you should spread the awareness about the plants and trees, because we have seen in villages, if we go into villages we can see the cool winds and a fresh environment, nature. But now in the cities what we are seeing, the pollution, the dirty air. So it is dangerous for our health. So we should motivate ourselves also, and we should spread awareness among
in our societies also. So thanks to listening me. Good, very nice. Good, बहुत अच्छा बोला आपने. Very nice. So you saw how she spoke. Very good, wonderful speech given by her. Slow but steady. Clapping करेंगे नेहा के लिए. Come on, जोरदार clapping. Okay, so now let's see who's gonna come next. Who is the next person going to speak on the stage? Very nice effort. नेहा ने effort तो अच्छा किया, लेकिन कमी रही किसकी? एनर्जी की, जोश की, कॉन्फिडेंस की, और टोनैलिटी की, वॉइस मॉड्यूलेशन की. सिंपल तरीके से बोल रहे हैं. ऐसे टॉपिक पे तो आपको जबरदस्त तरीके से बोलना चाहिए, बिकॉज यू आर स्पीकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी. तो जबरदस्त तरीके से बोलिए. सो गाइस, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पीपल जस्ट डोंट केयर अबाउट इट. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाई वी शुड नॉट किल एनिमल्स. There are so many people, they are killing animals. They don't think about their pain. They just want their own taste. Is it right to kill any animal because of taste? I don't think so. If you believe in that, can you tell me why we should kill any animal? ऐसे जोश दिखाना है आपको. क्या दिखाना है? जोश. चलो भाई, डब्बा, मेरा डब्बा. Come on. Who would come next? कौन आना चाहता है? कम ऑन, जोरदार क्लैपिंग करेंगे इस बच्ची के लिए. कम ऑन, पुट योर हैंड्स टुगेदर. व्हाट्स योर नेम? Shivani. हे शिवानी, तू लगती है नानी. ये गाना था ना, कौन सी मूवी में? खूबसूरत, आई थिंक, ऑफ संजय दत्त. चलिए बेटा, आप ये लीजिए माइक. Thank you. हा. वेरी लॉन्ग टॉपिक एक्चुअली. A day in Delhi Metro. Oh. Okay, you are going to share an experience when you were at Delhi Metro or you were on Delhi Metro. Got it? It's easy ना? Very good, very nice. जिसने लिखा होगा वो सोच रहा होगा, हो इतना आसान टॉपिक. Good, carry on. So let's go ahead and start clapping for Shivani one more time. Come on. A day on Delhi Metro. Shall I start, sir? Yes. Okay. Good morning, everybody. Good morning. My name is Shivani. Shivani, sorry to interrupt you. Keep your hands in front of your tummy or try to utilize your hands like you use gesture. So हाथों पीछे छुपाना है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि आप चाकू लेके बैठी हो, खड़ी हो. Okay. Come on, फिर से करेंगे शुरू. 1, 2, 3, start. Good morning, everybody. Good morning. Myself Shivani, and today I share my experience about a metro visit. Okay. A day on Delhi Metro. Okay. A day on Delhi Metro. One day I visit in Delhi Metro. Then I realize something is not equal with boys and girls. Between boys and girls, because many times I see in the bus and Delhi Metro also, when some aunties and some ladies come in the bus, they are not stand properly and they have to sit to some like man or boy. She expect like boys and males offer them him seat, but when they not do like on like them, so she felt very bad and she behaved like very bad, and this is not good. This is not equality. When we talk about an equality, so we are go with boys and girls like equal situation, like we are talking about seat and we are talking about in reservations. So this is not good to boys like males. Our India is more developed than before some time. So I'm glad, I'm proud of my India. India is my pride. That's it, sir. Okay, very nice, sir. Come on, put your hands together. Very nice. Okay, very confident speaking. काफी अच्छा बोला शिवानी ने. Okay. So although the topic was not given by her, it was someone else topic. किसका topic था ये? ये टॉपिक था इस बच्चे का. He thought कि उसका नंबर आएगा, वो बोल पाएगा, लेकिन इनके साथ हो गया धोखा.
चलिए नाउ लेट्स सी हु इज गोना कम नेक्स्ट. कम ऑन, रेज योर हैंड्स अप इफ यू वांट टू कम. जल्दी से हाथ उठाइए, कौन आएगा नेक्स्ट? नहीं नहीं, देखो किसी के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ. If you believe in yourself, raise your own hands. कि सर आई एम गोना स्पीक. दूसरे का नाम भी लेना, पड़ोसी दुश्मनी नहीं निकालनी है कि कल उसने मेरा नाम लिया था, आज मैं उसका ले देता हूं. So what you need to do, you just need to raise your hand up and come here. Come on, you need to raise your hand. Okay, that boy would come on the stage. Come on. Okay, actually मुझे लगता है टॉपिक इन्हीं का लिखा हुआ है. Oh wow. Is yours? सच में? Yes. अब तो नहीं बदली जाएगी पर्ची. Yes. अब तो नहीं बदली जाएगी पर्ची. हाँ, इनका मतलब ऐसे कैसे हो रहा है बताइए? इतने बड़े डब्बे में आपने सही से इसे शेक नहीं किया ऐसे. चलो बच्चों करो शुरू. ये लीजिए. कम ऑन, जोरदार तरीके से आग लगानी है आपको. कम ऑन, बहुत टॉपिक जो आपका है ना बहुत सेंसिटिव है, तो उस पर ऐसे ही बोलना है आपको, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ, वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करते हुए. इसमें उंगली मत घुसाओ. कम ऑन, अच्छे से ऐसे होल्ड करो. हाँ यस. कम ऑन, जोरदार क्लैपिंग से फिर से स्वागत करेंगे इनका. कम ऑन. Good morning, everyone. Good morning. So today I am going to share about my opinion on Pune Porsche case. Pune Porsche case, where a 70 years old guy hit the two bikers. One is Hit. Second form hit is hit only. hit, So where a 17 years old boy hit two guys on a bike. on a bike. One of them on the bike is girl, and the boy name is Anish, and I don't remember girl's name. Energetically. So it is the 18th May. The date was 18th May when this incident happened. A boy named Vedant Agarwal were in a pub drinking alcohols, and just because he passed in his 12th boards exams, so he gone there to enjoy by drinking alcohol and such kind of things. So he left the pub, and on the other hand, which was hit by bikers, the bikers who were hit by his car, who were also in the same 3 kilometers away distance club from his pub where Vedant Agarwal was enjoying with his friends. Vedant Agarwal left the pub, and he is totally drunk and very unconscious, and even don't know about what is going to happen next about with him. So he gone from the lane in Pune. This is very narrow lane. The lane can't allow anyone to drive very fast in the speed of more than 200 kilometers per hour. But that guy do that and killed the both of the girl and the boy as well. And if we talk about our justice system, Judicial system. judicial system, one at night 3 a.m. a MLA of Pune gone to that police station to get him on a bail. And source said us that they were enjoying in the police station and eating pizzas, burgers, and enjoying that. There is nothing that he felt that he has regret about it, that he has done. And the same night police station gave him the bail. But after the mass media, when the social media got angry about this incident, then this guy gone to the juvenile court, where the inspection on his alcohols, like how much alcohol did he drank, and so this kind of inspections are going to start. But
there is a plot twist here. The doctors, two doctors from the Pune, tried to mislead this case. They tried to erase the evidence, like he take the blood samples of that guy, but he changed that blood samples with someone else, where there is no though there is no uh, alcohol found in his blood. So I can say this is very bad happened to that family. Uh, uh, that Anish, the guy who rides the biking on that day, and the girl same as well. So our government should do more actions, more hard actions on that guy who killed them by their car. But there is nothing like that. So it is very shameful act. I can say this can never happen to anyone. Or yeah, that's it. Thank you. Okay, good effort. Okay, that was nice effort by Piyush to come on the stage to speak. Very nice. Okay, so इन्होंने काफी अच्छे से बोला है, लेकिन थोड़े से ऊर्जावान कम लगे. You didn't have tea today? Okay, so I thought ये और जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कभी कभी बच्चा नींद में चला जाता है. तब को जबरदस्त तरीके से बोला, कितना सेंसिटिव टॉपिक था, इस पे आप गुस्सा दिखा सकते थे. You could have shown your aggression. What's happening in the society? People are supporting such kind of people. If they have money, they are having right to do anything. You can see, as he said, an MLA went to police station at night to get him released from there. Can we really get justice in such kind of system? ऐसे थोड़ी सी गुस्सा दिखाओ अपना, then you will become a public speaker. So कोई बात नहीं है, अभी ऑन द स्पॉट टॉपिक हो रहा है. वैसे इनका तो वही मिल गया जो बोलना चाह रहे थे. किस्मत अच्छी थी, दो लोगों की किस्मत अभी अच्छी रही है. अब मैं थोड़ा गड़बड़ी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से हिलाता हूँ. Now, come on, Vishal, come on the stage. Now, let's see what topic you are going to speak upon. The topic that you have to speak is money is not everything. Very nice topic. Whose topic is it, by the way? Raise your hands up. Very good. So, it's... पहले अच्छा लगा था सर ग्लोबल वार्मिंग. अच्छा दिखाइए. वेरी नाइस. ये होती पार की नजर. मैंने सिर्फ वही देखा जो लिखा है, इन्होंने कटा हुआ भी देख लिया. ओहो, ग्लोबल वार्मिंग. वेरी गुड, वेरी नाइस. कम ऑन, चलिए, कम ऑन, स्टार्ट स्पीकिंग. क्लैपिंग करिए फिर से एक बार इनके लिए. स्टार्ट. Good morning to all of you. Good morning. So today, sir, as you know all that so today, sir gave us surprise, in which I have to speak on the topic of others man ki baat. Others man ki baat. Very nice. Yes. So my topic is money is not everything. So because some people think that money is everything, and they are making money more and more and more, and they are forgetting their family, their relations, their enjoyment. They forget everything. What they are doing? They thought only money is everything. Money is not everything. Your family is everything. Your friends is everything. Money is must, but not everything. This is my point of view. So that's my topic. Thank you very much to listening me. Okay, nice effort. Okay, although it was not up to the mark, but very nice effort. काफी अच्छा effort किया विशाल ने. He got actually, confused कि ये topic कहाँ से अचानक से आ गया. But topic was very easy to speak upon. You could have said कि money is something which is very important, but not everything. That we cannot think that it is beyond everything in this world. So we have to start with like this, okay? Okay, so you might have heard slow and steady win the race. तो इन्होंने धीरे बोला, अच्छा बोला और बहुत अच्छे से पॉइंट्स रखे. Very good. तो देखते हैं किसकी धड़कन बढ़ी हुई है. किसकी धड़कनें बढ़ी हुई है देखते हैं बच्चों. Let's see who's gonna come next. हाथ उठाइए, come on, raise your hands up. नहीं तो फिर मैं बुलाऊंगा. अपनी मर्जी से ही आ जाओ. ठीक है, I am gonna call you. You want invitation? I like it. चलो. So now from this side, 1, 2,
you both have spoken. Anuj, come on the stage. You have been sleeping for a long time. Come on. He has been dreaming. He has been sleeping. कि क्या बोलने वाले हैं? So Anuj के लिए है जोरदार topic है. This is considered. Oh, this topic is traveling. Very good. Traveling. Benefits of traveling. You can talk about. What is traveling? Got it? Very good. Mike, right? So okay. Come on. Yes. Come on, guys. Put your hands together one more time for him. Come on, everyone. Good morning, everyone. Good morning. One more time, good morning कराओ थोड़ी जबरदस्त वाली. Come on. Good morning, everyone. Good morning. I am Anuj Purohit and I am today standing in front of you to speak on the topic traveling. So, traveling, many people do traveling in summer vacations as they are going on. It's too hot in Delhi, so many people went to Manali and other places in Uttarakhand for a change in weather. Some also do traveling for change of their mood and to take a vacation. Some went to some temples like Jagannath Puri, Ayodhya Mandir, Somnath Mandir in Gujarat for worship of their god. So if we travel to some states like Sikkim and northeastern states or southern India, we got to know about their culture, traditions, and their language. If we go to their villages, they welcome us warmly. Some went to their own villages. Okay, so you can go to traveling if you have some vacation or on weekends to spend some time with your family. And well, thank you for listening. Wait. Mic गिर जाएगा वहां से मत रखो. Okay, give it to me. Okay, you saw that how that boy spoke. He spoke very well. Ideas were fine. Ideas अच्छे थे. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? Confidence नहीं लग रहा था. ऐसे लग रहा था धोखा हो गया है. और when you might have seen, you might have noticed eye contact कहाँ था? ऊपर तरफ देख के सोच रहे थे ऐसे. उधर भगवान जी को देख के ऐसे. So when you talk to people, when you talk to your audience, you must have proper eye contact with the people. If you don't look at them, they don't listen to you. अगर आप उनकी तरफ नहीं देखते हैं तो वो सो जाते हैं. So what you need to do, you look at them, just look into their eyes and they will be forced to respond. वो ध्यान से आपको सुनेंगे. चलिए, come on guys, who is gonna come next? Come on, जल्दी से आइए. Pradeep will come on the stage. Come on, put your hands together for Pradeep. So Mr. Pradeep, take the mic and come on, speak energetically जैसे कि आप बोलते हो. आग लगा देनी है आपको, ठीक है? आपके लिए नया टॉपिक है. Learn English. Learn English. It means learning English. अंग्रेजी सीखने के फायदे आपको बताने हैं, ठीक है? So Mr. Pradeep is going to tell us what are the benefits to learn English. Who wrote it? किसका टॉपिक था ये? बहुत अच्छा, आसान टॉपिक चुना था इन्होंने पर धोखा हो गया. अब आपको बोलना पड़ रहा है. Come on, शुरू करेंगे. चलिए, come on, give a huge round of clapping for him. Come on, everybody. Good morning, all of you. Good morning. My name is Pradeep. Today I am telling about we should learn English because nowadays English is very important for in our life. We should learn English Keep the because mic up. we should learn English because English is very important nowadays, and if we learn English, we can do anything like we can crack our interview, and if we prepare any exam for any exam, and we can learn English. Today is my topic. That's why topic is speaking English. Speaking English is my topic, and
Thank you for listening. Good, well done.